very good morning, students. Today I am also with one topic which is there in your syllabus in MA, and that is very important, as well as it is very new in a way that people have a lot of conceptions about it, but nobody is able to tell exactly what the hell is this, which is known as postmodernism. Postmodernism is nothing but it is a world view. Postmodernism is a world view that started in 1960s and became very popular in the late 20th century Western world, at least amongst intellectuals. And it is still going on, and it is getting stronger day by day. Its influence extends into all areas of life, including culture, morality, and economics. It is always to be remembered that it is a secular philosophy. It does not incorporate any sort of religious belief. Postmodernism arose as a consequence of a perception that Marxism has lost its value in the Soviet Union, and it has failed in the Soviet Union. Secondly, it is a consequence of a distrust in worldviews such as Marxism, liberalism, and religion. After World War II, you know that people started to drop their beliefs, their trust in religious institutions and religious scriptures. Third, the perception that the Enlightenment idea of progress was flawed. It is also a third consequence which led to postmodernism. Then, next is the discoveries of uncertainty within science and mathematics. When science, which was supposed to be certain earlier, before 1960s, that science itself, with lot of its thesis and antithesis sort of articles, proved itself to be a thing which cannot be trusted and relied 100%. So a kind of distrust arose. Also, postmodernism arose as a consequence of in art especially as a reaction against modernism, right? And then it arose as a perception of the emergence of the post-industrial society. Also, the emergence of the identity politics and an anxiety about Eurocentrism in philosophy, and above all, postmodernism arose out of the emergence of neoliberalism. So this neoliberalism is an area which requires a special emphasis from my side to be dealt with, because this neoliberalism has, I think, that played an important role, and the most important role, in the emergence of the concept like postmodernism, in the emergence of a worldview like postmodernism. So before I delve into postmodernism, let me discuss in short what exactly is this neoliberalism. This neoliberalism is the name given to the most extreme kind of laissez-faire capitalism. Laissez-faire capitalism means it's a liberalism with a completely free market. Completely free market means without regulation, a minimal state, and no publicly run services. It is simply a policy of allowing private businesses to develop without government control. This is called neoliberalism. So at a personal level, neoliberalism manifests itself as a strong individualism. With the rise of neoliberalism, we become very much individualistic. We become very personal
We become very profit oriented. As the state provided services are eliminated, people are forced to provide themselves with health care, education, welfare, and pensions. They are forced to provide themselves with the health care which was earlier taken care of by the government. Now people under the neoliberalism are forced to take care of themselves with their health care, with their education, with their welfare and pensions. You see, there is an old pension scheme को जब से हटाया गया है तो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ में सारे लोग पूरे देश में आंदोलनरत हैं. So these shared values are marginalized under new capitalism, neoliberalism, right? This happens. So community is weakened. Community in itself becomes weakened, कमजोर हो जाता है, and people think that their and every other worldview is acceptable. So as we will see, the postmodern emphasizes on individualism is just right for neoliberalism. When we see that this postmodernism emphasis on individualism is just right for the neoliberalism. Now, what are the different features of this postmodernism? The first, let us see that how postmodernism has challenged the very idea of text. I am taking this lecture in reference to English literature only. Firstly, some terminology must be clarified. In everyday uses, the word text usually means a piece of writing, correct? But it is used differently by philosophers and academics. A text may be a piece of writing, say a novel or a novella or an essay or a poem, a newspaper article, an email, for example. But a text can also be a film, a television serial, a program, a painting, a sculpture, or a play. That can also be a text. So when we talk about reading a text, it means reading a book, looking at painting or whatever. So the text concept has absolutely been changed under this postmodernism, right? It can be anything. It can be film, it can be television serials, soap operas, anything. Earlier, text was just a book, a piece of poem, or a writing, or essay, or journal articles, that's all. So here is a change. Now, what the second feature that happened under postmodernism is that we should take care of, that we started to doubt the meaning of the word meaning. Suppose when we were reading earlier, we were reading anything with the purpose of deriving some meaning out of it. Now, before we consider what the word meaning stands in postmodernism, let us see what was meaning in modernism. Does a particular text have a unique true meaning? In modernism, a text embodies a meaning, a single meaning. कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, कोई भी चीज़, होली कुरान, कोई भी चीज़ हम पढ़ते थे, बाबा साहब का ग्रंथ पढ़ते थे, तो उसकी एक मीनिंग निकलती थी, एक सिंगल मीनिंग निकलती थी, एंड ऑल दैट इज नीडेड इज फॉर समवन टू रिवील दैट मीनिंग. और सब लोग उस मीनिंग को पाने के लिए उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते थे. देयर मे बी स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई द रियल मीनिंग, बट अ सिंगल रियल मीनिंग इज देयर. जब तक मॉडर्निज्म रहा और पोस्ट मॉडर्निज्म का समय नहीं आया था, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम लोगों के हाथ में एक ही मीनिंग, रामायण का एक ही मीनिंग निकलता था कि इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर हैं तो कैसे हम लोगों का व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह होना चाहिए. रावण के बारे में हम डिस्कशंस नहीं करते थे, रावण को महान देखने की कोई चर्चा ज़्यादा नहीं होती थी, बिकॉज देयर वाज अ सिंगल मीनिंग टिल मॉडर्निज्म. व्हाट हैपेंड इन द मीनिंग इन पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट डिफरेंट इंडिविजुअल वर्ल्ड व्यूज started being accepted.
when different people read a text, they will probably each form their own interpretation of it. जो कोई भी पोस्ट मॉडर्निज्म में आज़ादी दे दी, whatever you read it, interpret it according to your own world view. अब रामायण की 10,000 मीनिंग है. अगर इंडिया में 1 करोड़ लोग हैं पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं, तो 1 करोड़ मीनिंग निकल के बाहर आएगा. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, आइडियोलॉजी, वर्ल्ड व्यू एंड कल्चर. है ना, ये अंतर है पोस्ट मॉडर्निज्म वाले मीनिंग में और इसके पहले जो मॉडर्निज्म जब होता था उस समय के जो मीनिंग में. यह बड़ा अंतर है कि पहले सभी चीज़ों की सिर्फ एक मीनिंग होती थी, जो कि अक्सर ऑथर अपने प्रीफेस से या फॉरवर्ड से उसको बताने की कोशिश करता था. अभी जितने हाथ और जितने पाठक उतनी मीनिंग. ये है पोस्ट मॉडर्निज्म में. टेक्स्ट का स्वरूप बदल गया, उसी तरीके से मीनिंग के मीनिंग्स बदल गया. एक एजुकेशन है ना, जिसकी जो बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग उस मीनिंग को लेना शुरू करता है. सो व्हेन एन इंडिविजुअल रीरीड्स अ टेक्स्ट after a week or a decade or a year or after 20 years or whatever, their experiences or worldview may well have changed, and so they may well make a new interpretation of the same text. किसी चीज़ को हमने आज पढ़ा, उसी चीज़ को हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल, 1 डिकेड के बाद पढ़ते हैं, तो सेम टेक्स्ट से सेम व्यक्ति जो 5 साल के बाद नए अनुभव के साथ उसको पढ़ रहा है, ही इज़ हैविंग अ न्यू एक्सपीरियंस एंड ही इज़ हैविंग अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट. So each reading of a text is unique. There are about 7 billion people on the planet. In this view, each and every one of them may have a unique experiences and interpretation of any one text. And they may well have a different interpretation when they read it again and again. This is where postmodernism is, that postmodernism leaves us with no single meaning. It leaves us with the multiple meanings. Otherwise, we can also say that postmodernism leaves us with no meaning. Is it leading us to meaninglessness? We'll have to think about it. Now, in postmodernism, the third feature is that all schools are equally valid. There are a number of schools of literary criticism, my dear friends, as you know. Examples are as feminist, post-colonial, gay, reader response theory, Marxist theory. So, for example, the feminist school starts from the assumption that women are oppressed in many societies. A feminist approach to literary criticism therefore tries to identify the depiction of women's oppression within a text, or it might identify the omission of this idea. So a text might simply depict oppression or condone it or criticize it. So, but feminism is only one of the many worldviews. There are many other worldviews together, hand in hand, it's going on. So the postmodernism says that there is no way of favoring one worldview over another. Right? And they are all equally valid. They are all merely alternative interpretations. That is why they say that one interpretation is not final, as all equals are equally valid. There are multi-interpretation of the text. So here is postmodernism. The fourth feature is the death of the author. Thus, postmodernists say that it is meaningless to consult the author to find out the definitive meaning. This view is called the death of the author, the title of a 1967 essay by Roland Barthes. It has been taken from Roland Barthes, who postmodernists use this term to emphasize that when a text is read, it is only of limited use to know about the author
their background, character, interests, worldview, and even their views on the text itself. Because why? Because author cannot be fully aware of the meaning of the of what they have written. गजब बात है. पोस्ट मॉडर्निज्म में हम लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि लिखने वाले ऑथर को भी नहीं पता है कि वो लिखना क्या चाह रहा है. अजीब बात है. और वो जो लिखा है उसका मीनिंग का इंटरप्रिटेशन उसकी जागीरदारी नहीं है. पाठक उसके मीनिंग को अपने अनुभव के आधार पर लेने के लिए आजाद हैं. This is why it is called the death of the author. When the author is in the periphery of the meaning and reader is in the center. लेखक शब्दों के मायने के परिधि में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह, और जो उसको पढ़ने वाला पाठक है वो अर्थ के केंद्र में बैठ गया है और अपने लिहाज से, अपने जीवन के अनुभव के लिहाज से उसके मीनिंग को पिरो रहा है. ये है मामला. Now, उसी के साथ तब ऐसी बात, there is concept like deconstruction comes in the scene. And deconstruction is not reconstruction. Deconstruction is also not destruction. Deconstruction is deconstruction. Deconstruction in everyday language, the word deconstruct means to analyze, to expose the workings of something. The Oxford English Dictionary says that to deconstruct is to reduce something to its constituent parts in order to reinterpret it. हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, रिड्यूस करते हैं ताकि उसको हम रीइंटरप्रेट कर सकें. बट द पोस्ट मॉडर्निस्ट्स led by Jacques Derrida give the term deconstruction an additional distinctive meaning. The word deconstructs also retains its original meaning, and according to Derrida, words are untrustworthy. I will come to that. To postmodernists, the deconstruction does not mean analysis or critique. Neither it is a single coherent method. It is concerned with questioning the meaning of a text. It is about uncovering different meanings in a text, some of which may be inadvertent or unintentional. Carrying out the act of deconstruction on a text is to uncover its lack of meaning by asking disruptive questions, to almost destroy it. Correct. So deconstruction proceeds by revealing that a text has multiple meanings. If it has multiple meanings, it has no single meaning. अगर किसी चीज़ के एक नहीं बहुत सारे मायने हैं, मतलब कोई मायने नहीं है, कोई एक अर्थ नहीं है. So it has no single meaning and it arguably has no meaning. As for example, अगर हम कहें कि heart, मैंने पिछले भी अपने किसी वीडियो में जब बात आई थी तो समझाया था. What is the meaning of heart? If you are a citizen of Tropic of Cancer, for you heart means anything around 30 degrees to 50 degrees Celsius. If you are living at equator, it may be 50 degrees Celsius for you. Then what is hot for the Antarctica people? For them 5 degrees Celsius means hot. बहुत सारे बच्चे से पूछना हॉट क्या है? सर जो ठंडा है नहीं है. और ठंडा का मतलब क्या है? सो देर इज़ नो परफेक्ट मीनिंग. जैसे ही हम एक हॉट के आसपास के एक मीनिंग को पकड़ते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही अंटार्कटिका के लोगों के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं 5 डिग्री सेल्सियस हॉट. सो देर इज़ नो सिंगल मीनिंग. और एक और हॉट हम लोग जानते हैं वो वाला, बट देर इज़ नो सिंगल मीनिंग. वही वर्ड है HOT हॉट, देर इज़ नो सिंगल मीनिंग. सो लेट अस assess postmodernism from a variety of, that is why Derrida has said words are untrustworthy, we cannot rely upon that because they change their centers of the meanings, right? So let us assess postmodernism from a variety of perspectives.
identifying its strength and weaknesses. Like it begins with, let us see कि आइडियोलॉजी के मामले में पोस्ट मॉडर्निज्म कहाँ है, पावर के मामले में कहाँ पर खड़ा होता है पोस्ट मॉडर्निज्म, नॉलेज एंड ट्रुथ के मामले में, मॉरल वैल्यूज़ के मामले में, मीनिंग्स के बारे में, लैंग्वेज एंड रियलिटी, कल्चरल फ्लैटनिंग द सेल्फ, रीजन, कॉजालिटी, साइंस, हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूसेंस एंड मार्जिनल्स के बारे में, अगर इन सारे बिंदुओं पर, ये सारे जो बिंदु हैं, these all are the centers of the society. So on these small centers of the society through on which our cultural societies were revolving around, इन सारे सेंटर्स बिंदुओं पर पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे इन सारी चीज़ों को देखता है. Let us see. One perspective of postmodernism that it has no foundations, no assumptions, no beliefs. Postmodernism में there is no beliefs, no assumptions. There is a strength. This is a strength because it avoids any basis for criticism of any foundations. But it does lay it open to the question of why it has no foundations. On the other hand, because it has no foundations, it is capable of criticizing any ideology that does have foundations and any consequences of these ideologies. पोस्ट मॉडर्निज्म के पास कोई एक फाउंडेशन नहीं है, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, कोई हिंदुइज्म नहीं है, कोई इस्लामिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा आइडियोलॉजी नहीं है, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके इर्द गिर्द हम बात कर सकें. और चूँकि इर्द गिर्द बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास बात करने का भी कोई मीनिंग नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी कुछ नहीं है. देयर इज़ नो बिलीफ्स. So this is where I can criticize anything, I can appreciate anything. This is where we are. Now perspective 3 जो है facts, knowledge and truth में, postmodernism questions whether there is an ultimate truth that can be uncovered through investigation. क्या कोई ऐसा ultimate truth है जिसको हम investigation से पा सकते हैं? This is perhaps a healthy skepticism. That is attitude of doubting the truth. But in order to understand and change the world, human beings do not need an ultimate truth. ये बोलता है postmodernism. We do not need any ultimate truth. Some working temporary interpretation of the world is often sufficient and we call them alternative truth. आज पूरी दुनिया, पहले मॉडर्निज्म के समय में सब लोगों को जीवन का क्या है, जीवन में सत्य की खोज पे हम निकले हैं. क्या कर रहे हैं? सत्य की खोज में निकले हैं. सत्य किधर है पता नहीं, सत्य मिल. अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में कॉन्सेप्ट है कि देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज देयर विद अस इज द अल्टरनेटिव ट्रूथ. अल्टरनेटिव ट्रूथ से हम लोग को अपना काम चलाना पड़ेगा. There are large gaps in scientific knowledge. कोई नहीं जानता कि किससे क्या हो रहा है, क्योंकि अपने ही साइंटिफिक, आज पेपर में आ जाता है कि संडे हो या मंडे रोज़ का अंडे, अगले ही पेपर में साइंस का जर्नल छापता है अंडे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ट्रूथ. सो नॉनदलेस साइंस हैज ब्रॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग्स दैट हैव यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बट देयर इज नॉनदलेस देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ nowadays, right? There is alternative truth से हम लोग काम चला रहे हैं. नाउ मोरल वैल्यूज़ के ऊपर में पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफर्स नो गाइडलाइंस व्हाटसोएवर ऑन मोरालिटी. कोई गाइडलाइंस नहीं है. हाउ अ सोसाइटी शुड रन, देयर इज नो परफेक्ट गाइडलाइंस अबाउट इट. Instead, it recognizes a bewildering range of worldviews with the disparate moral outlooks. It offers no way of choosing between them or assessing them. There is another aspect of paralyzing effect. So, कोई गाइडलाइन नहीं है मोरालिटी के ऊपर में, और दे से दैट मोरालिटी करके कोई चीज़ होती नहीं है. कल के डेट में सती प्रथा, जो औरतें सती नहीं होती थी उसको हम लोग इमोरल बोल देते थे. बाद में वो सिस्टम ही हट गया. फिर बाद में होने लगा कि नहीं, जो औरतें रीमैरिज कर लेंगे, विडो का रीमैरिज नहीं होना चाहिए, जो कर लेती थी उनको हम लोग इमोरल बोलते थे. बाद में फिर उसके लिए भी चला और एक्सेप्टेंस मिला कि नहीं, बचपन में अगर कोई
विडो हो जाती हैं तो तमाम उम्र वो कैसे गुजारेंगी। तो दोबारा शादी का उन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया और उनको फिर वो हक मिला शादी करने का। तो फिर वो इमोरल का जो टैग है उन औरतों से हटा दिया गया। उसके बाद में फिर बोला कि नहीं ठीक है शादी कर ली, लेकिन स्त्रियों को बाहर नहीं पढ़ने जाना है। जो बाहर पढ़ने जाएंगी वो इमोरल हो जाएंगी, जो बाहर काम करने निकलेंगी वो इमोरल हो जाएंगे। फिर उसके लिए भी जद्दोजहद चला। अब वो बाहर जा रही हैं तो इमोरल का जो टैग है वो हट गया। सो देर इज़ वही, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न। वो बोलते हैं कि कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात, मोरालिटी की बात नहीं कीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हमारे, जो सोशल वैल्यूज़ अटैच्ड विद मोरालिटी, वक्त के साथ चेंज होते जाते हैं। इन पोस्ट मॉडर्न साइंस के बारे में, पोस्ट मॉडर्न साइंस का जो देर इज नो साइंस, पोस्ट मॉडर्निज्म देर इज एंटी साइंस इन मेनी रेस्पेक्ट्स। Postmodern science is anti-science in many respects. Some postmodernists argue that science is not really knowledge at all. हम लोग पहले साइंस को भगवान ही मान लेते थे, लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट साइंस बोलता है देयर इज नो साइंस एट ऑल, देयर इज नो रियली नॉलेज एट ऑल। Instead they speak in terms of chaos theory, the unpredictability of science, the indeterminacy और अनसर्टेनिटी ऑफ इवोल्यूशन, डिवोल्यूशन एट्सेट्रा। बोलते साइंस का क्या, सारी पूरी दुनिया जो है क्योस थ्योरी में चल रही है। अभी केदारनाथ में वो अचानक से लोग गए, बाढ़ आ गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार, कैसे क्या हो रहा है। और इट इज़ ऑल्सो सेड कि भाई जो भी सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, अटलांटिक में कोई बटरफ्लाई अपना विंग्स को फ्लैप कर रही है तो इट्स इम्पैक्ट विल बी इन द पैसिफिक ओशन ऑल्सो। तो साइंस करके देयर इज़ नथिंग एज सच। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक केओस थ्योरी, हम कहीं जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है। सो कुछ साइंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता। So this is called anti-science age. Now, another postmodern criticism of science is the way that it proceeds. It finds that science is carried out in isolated silos. Corporations controls research and information dissemination. Nowadays, people also believe that lot of scientific researches are not original but corporate guided researches, corporate funded researches. अगर किसी कंपनी को कोई अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, they fund this group of scientists to write up those kind of research articles which will endorse their products. जैसे एड्स के बारे में बोला जाता है कि एड्स के बारे में जो रिसर्च की गया, उस समय में पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मलेरिया से लोग ज़्यादा मर रहे थे। सो दैट काइंड ऑफ रिसर्चेज आर टू एंडोर्स दी कॉन्डम कंपनीज। उसके लैटेक्स की प्रोडक्शन इतने ज़्यादा है कि उसको बढ़ाने के लिए रिसर्चेज किए जाने लगे। अभी मैं अंडे की बात कर रहा था, संडे या मंडे रोज़ खाएं अंडे, और सम अदर डे हम लोग को वही साइंस जर्नल जिसमें कि अंडे की तारीफ करती मिल रही थी, वही साइंस आर्टिकल विस्की की पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बताता है। उसी आर्टिकल्स में, उसी रिसर्च आर्टिकल्स में विस्की के बारे में साइंटिफिक रिसर्चेज आते हैं कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज़ वेयर दिस इज कॉल्ड देयर इज एंटी साइंस, है ना। दिस क्रिटिसिज्म डिमांड आंसरिंग, राइट। नाउ in his article Anything Goes, Fairbrand further explains how science works. In the history of science, many theories have arisen, been accepted or established, promoted as the truth, and then eventually discarded. किसी समय उसको ट्रूथ की तरह भी accepted and sometimes we discarded it. When a scientist promotes scientific data in support of a theory, that bit of data is anything but neutral, because the scientist has an agenda. In all fields of science, questions remain open as scientific theories are regularly tweaked. And to top it off, the scientific establishment is very much politicized. बहुत ज़्यादा politicized हो गया है, और जितने भी डेटा हैं वो प्रोजेक्टेड डेटा होते हैं, वो हिडन एजेंट डेटाज होते हैं जो
जो इंडोर्स करती है किसी प्रोड्यूसर्स को. So this is where the scientists regularly work with unproven assumptions and filter all data through their preconceived ideas. As for example, कोई कंपनी अगर विश की खर्च कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो साइंटिस्टों से वो कहवा देती है अल्कोहल इज़ गुड फॉर हेल्थ. वो न्यूज़पेपर में अक्सर आप यू विल सी द science columns are written where alcohol has been given a special place, right? Alcohol has been glorified. So this is how science works nowadays. That is why it loses its credibility. Horn, for example, points out that science is not merely a progressive and incremental discipline that studies and records facts. So-called facts can be understood and interpreted in a variety of ways depending on the worldview assumptions of the scientists. So that is where we should know. So this is where the science is. So this was there, So even history in the postmodernism is not pure, because doubt is also here. And as we have seen that this is a world where there is a fight regularly between history and new historicism. So what is new historicism is that, as we have seen, postmodernism is deeply critical of history and any ability of historians to uncover reliable information about the past. Postmodernism poses the following challenges for history, and it says under the new historicism, first, is it possible to reliably uncover information from the past? Postmodernist जो historians हैं, जो new historicists हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या 100 साल 1000 साल पहले की चीज़ों को एग्जैक्टली हम रेप्लिकेट करने की कोशिश या बताने के प्रयास करते हैं, तो क्या वो सही है? इज इट पॉसिबल? सेकेंड, इज इट पॉसिबल टू कैरी आउट हिस्ट्री विदाउट प्लेइंग a specific ideology? Every historians are bound with one or another ideology. If they are having these preconceived notions with them, fixing themselves and gluing themselves with a particular ideology, is it possible to dig out the original neutral history that should be known by the citizen? I think it is not possible. If my mind is colored, my vision is also colored, and through that lens, if I'll start to see, I'll see the things I want to see, and I want to make the world to see. Is third question that postmodernism asks, is there a such thing as a single version of the past? क्या past का एक ही कोई single version हो सकता है? That is why nowadays many kinds of histories are written. Every day historians are coming up with their own versions. That is why history, which was reliable in earlier times, is not reliable anymore. How is history different from fiction? Now it is also, since I am not documenting something which I am witnessing, rather as a historian I am documenting something which has already happened in the past. So of course my write-up has become fictitious. So if my write-up has become fictitious, if I am using my imagination into it, if I am involving my imagination into it, my fancy into it, how history is different from a normal kind of fiction? This is the biggest question that is posed by the postmodernism on the traditional historians, and that is why they write a new kind of history known as new historicism. वो अपने पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को लिखते हैं. There is a separate lecture of mine based on new historicism. You should watch that. So new historicism examines first the broadest range of sources, second the presence of variety of meanings into it, third disputes over meaning, and fourth historians own perspective and motives को वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है. Now moral values पर बात करके postmodernism को थोड़ा I would like to conclude in short that postmodernism offers no guidelines whatsoever on morality. Instead, it recognizes a bewildering range of world views with disparate moral outlooks. It offers no way of choosing between them or assessing them. This is another aspect of paralyzing effect. A major problem with moral relativism is that it condones or it ignores, it overlooks behaviors such as fascism,
torture, female genital mutilation and even the Holocaust. पोस्ट मॉडर्निज्म के पास किसी भी चीज़ को जज करने का टाइम नहीं है, या पोस्ट मॉडर्निस्ट के पास वो कोशिश कवायद नहीं है या करना नहीं चाहता है। पोस्ट मॉडर्निज्म हर एक उस मॉरल क्वेश्चन से अपने आप को बचाता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डेल्ट विद, चाहे वो क्वेश्चन फासिज्म का हो, if the question is related with fascism or if it is related with torture or female genital mutilation, anything, it escapes from there, because postmodernists do not delve themselves into the world of moral values. It accepts everything, it rejects everything, it is free, up to you what kind of interpretation you would like to have. So it does not fix itself into any kind of moral values. The challenges that postmodernism poses, that is why, that first, do facts exist? Because if everything is doubtful, so this is a question that postmodernism poses before us and it leaves us with no answer. आप अभी चाहेंगे इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा, कोई आंसर नहीं, क्योंकि पोस्टमॉडर्निज्म सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, आंसर नहीं देता है। और क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि डू फैक्ट्स एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन दैट इट आस्क इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फैक्ट्स? नो। थर्ड, डज ट्रूथ एग्जिस्ट? Nobody knows. Fourth, is it possible to uncover truth? Don't expect any answer. I am also a postmodernist. I can only pose questions. Do not expect any answer. Postmodernism always puts forth these questions and leaves you amidst questions. Do facts exist? Is it possible to identify facts? Does truth exist? Is it possible to uncover truth? I will pose only questions, and this is a challenge put forth by the postmodernists. It also poses the challenges to formulate a morality that is not based on foundations, to identify the rationale for any moral systems. The postmodernism assault on science. If all truths are equal, who cares what science has to say? If all truths are equal, then where is the responsibility of science to find out the real truth? Postmodernism has left even science on a doubtful state. The reasons I have dealt why. Because many of the scientific researches are nowadays corporate funded researches, purpose oriented researches, profit oriented researches. So at last I would like to tell you, my friends, suppose if there is a question, how different concepts like postmodernism, science, Christianity, Marxism or liberalism would try to answer, I have left it on the slide share, and I'll see that the questions, the same question, say for example, is it based on the assumption of materialism? Science say yes, we are based on the assumptions of materialism. Christianity says no, we are not based on the assumptions of materialism. Marxism say yes, we are based on the assumptions of materialism. Liberalism says no, we are not based on the assumptions of materialism. And postmodernism also say no, we are not based on the assumptions of materialism. So likewise, you can see there are different questions, how the same questions can be answered differently by science, Christianity, Marxism, liberalism and postmodernism. Through this slide, you can have a better perspective of postmodernism, how it deals with different kinds of questions in our life. Thank you very much, friends. Thanks a lot. Do not expect any answer.
words are untrustworthy. Do not trust my lecture what I have given to you, because we are in a postmodernist world. Johar. Thank you very much.